law. So mathematically, Henry's law is P equal to KH into X. X is the mole fraction of gas soluble in a liquid. P is the partial pressure or pressure applied on the gas. Then KH equal to P divided by X. Thus, according to this relation, solubility of a gas in a liquid increases with decrease in Henry's law, value of Henry's constant. So according to table number 2.2, when temperature increases, KH value increases. That is, KH directly related to the temperature. For a particular gas, when temperature increases, KH value increases. So when temperature increases, KH value increases. When KH value increases, solubility of a gas in a liquid decreases. That means solubility of a gas in a liquid decreases with increase in temperature. Thus, solubility of a gas in a liquid decreases with increase in temperature. Therefore, aquatic species are more comfortable in cold water than the hot water, because more quantity of dissolves oxygen in cold water than the hot water. So according to the Henry's, the solubility of a gas in a liquid decreases with increase in temperature. Therefore, aquatic species are more comfortable in cold water than the hot water, because more quantity of dissolved oxygen in cold water than the hot water. So कोल्ड वाटर में डिजल्व ऑक्सीजन का क्वांटिटी हॉट वाटर से ज़्यादा होता है, इसलिए कोल्ड वाटर में एक्वाटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल देन द हॉट वाटर. Now application of Henry's law. So first one is industrial application. It is the application related to industries. It is the application related to preparation of soft drinks and soda water. In soft drinks, carbon dioxide gas is found in dissolved state. Similarly, in soda water also carbon dioxide gas is in dissolved state. So to increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. That means कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ऊपर में हाई प्रेशर अप्लाई करके बॉटल को क्या किया जाता है, सील कर दिया जाता है. देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में डिजॉल्व स्टेट में होता है. और जब हम लोग बॉटल को ओपन कर देता है, इमीडिएटली प्रेशर लो होता है. सो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है. So second one application is related to biological application. So it is related to biological application is related to two types of symptoms of the disease. One is called bends, another one is called anoxia. So bend is related to scuba diver.
and anoxia is related to climbers, or anoxia is also related to people living at high altitude. So bends, it is a symptoms of disease. It is appeared in scuba diver. जब स्क्यूबा डाइवर पानी का अंदर में होता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर, उनका ब्लड में गैस का सोलिबिलिटी बढ़ जाता है. सो ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बट स्क्यूबा डाइवर का ब्लड में नाइट्रोजन गैस भी डिजल्व स्टेट में रह जाता है अंडर वाटर. जब स्क्यूबा डाइवर सरफेस में निकल के आ जाता है, उनका ब्लड से जो नाइट्रोजन, उनका ब्लड में जो नाइट्रोजन डिजल्व स्टेट में है, वो डिजल्व नाइट्रोजन धीरे धीरे ब्लड से लिबरेट होता है. और ब्लड से नाइट्रोजन गैस लिबरेट होके क्या कर देता है, हम लोग का बॉडी में जो कैपिलरीज है, जहाँ ब्लड सर्कुलेट होता है, कैपिलरीज लोग को ब्लॉक कर देता है. और जब कैपिलरीज ब्लॉक हो जाता है, देन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्री नहीं होता है. देन स्क्यूबा डाइवर क्या फील करता है, पेन फील करता है, एंड दैट सिम्टम्स इज कॉल्ड bends, or it is dangerous to the scuba diver. and anoxia होता है climbers का and people living at high altitude. high altitude में क्या होता है, partial pressure decrease हो जाता है. due to the decrease in partial pressure at high altitude, then solubility of oxygen in blood decreases. ब्लड का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना है टू द टिश्यूज. सो हाई एल्टीट्यूड में जब ब्लड में ऑक्सीजन का सोलिबिलिटी कमती हो जाता है, देन क्या होता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कमती मिलता है. टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कमती मिलने से, टिश्यूज को सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कमती मिलने से मेटाबॉलिक रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस स्लो हो जाता है. और इसी कारण से बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कमती हो जाता है, एंड देन पर्सन बिकम्स वीक, और दैट सिम्टम्स इज कॉल्ड एनॉक्सिया. सो एनॉक्सिया, दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, and bends, it is related to increase in partial pressure under water. So bend is related to increase in partial pressure, due to which solubility of gas in blood increases, and anoxia is related to decrease in partial pressure at high altitude, due to which solubility of oxygen in blood decreases. So I hope you will note down about the bends and anoxia from the textbook. Now let us solve a equation. It is an example from your textbook number 2.4 example. Question is, if nitrogen gas is bubbled मतलब passed through water at 298 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would be dissolved in 1 liter water? That means 1 liter, through 1 liter water, कितने लीटर, 1 liter water, through 1 liter water नाइट्रोजन गैस पास किया. नाइट्रोजन गैस कितना टेम्परेचर में पास किया, 298 केल्विन टेम्परेचर में पास किया. देन नाइट्रोजन गैस वाटर में सोल्यूबल होगा, and solubility of a gas in a liquid also depends on temperature. So temperature is mentioned here. How many temperature, 298 Kelvin. So nitrogen gas 298 Kelvin में 1 liter water का बीच से जब पास किया,
देन हम लोग कैलकुलेट करना है हाउ मेनी मिली मोल्स, मतलब हाउ मेनी मोल्स, मोल को फिर मिली मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाउ मेनी मोल नाइट्रोजन गैस वाटर में 1 लीटर वाटर में डिजल्व होगा, हम लोग कैलकुलेट करना है। सो यहाँ नाइट्रोजन गैस का ऊपर में प्रेशर अप्लाई किया। एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। सो नाइट्रोजन गैस को वाटर में सोल्यूबल करने के लिए नाइट्रोजन गैस का ऊपर में कितना प्रेशर अप्लाई किया, 0.987 बार प्रेशर अप्लाई किया। सो गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस एट 298 केल्विन इज 76.48 किलोबार। So for nitrogen gas, Henry's constant Kh also given. How many? 76.48 kilobar. So nitrogen gas पास कर रहा है थ्रू 1 लीटर वाटर। नाइट्रोजन गैस का ऊपर में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हाउ मेनी? 0.987 बार। और हेनरीज कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मेनी? हेनरीज कांस्टेंट 76.48 किलो बार। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हम लोग कैलकुलेट करना है 1 लीटर वाटर में कितना मोल्स नाइट्रोजन गैस डिजल्व होगा, हम लोग कैलकुलेट करना है। सो सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, सो हियर given how many partial pressure of nitrogen gas, partial pressure of nitrogen gas equal to how many? 0.987 bar, 7 bar. So on the nitrogen gas how many pressure is applied? 0.987 bar pressure is applied. So in this question Henry's constant Kh for nitrogen gas also given, how many? 76.48 kilobar. प्रेशर इन बार, सो किलो बार को हम लोग बार में कन्वर्ट करना है, 76.48 इंटू 10⁻³ बार, तो किलो में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 10⁻³ हियर इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑल्सो गिवन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन, हाउ मेनी? 1 लीटर, 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर. If volume of water is 1000 milliliter, then weight of water equal to how many? Weight of water we can calculate by multiplying density into volume of water, क्योंकि density equal to mass per volume, so mass equal to density into volume. Then density of water at 25 degrees Celsius or 298 Kelvin, 1 grams per milliliter. You have to remember it. Density of water at 298 Kelvin is equal to how many? 1 grams per milliliter. And volume of water given in the question, how many milliliter? 1000 milliliter. Then per milliliter cancelled, then it is equal to how many? 1000 gram. So 1000 milliliter of water, 1000 milliliter of water equal to how many gram of water? 1000 gram. So now we have to calculate number of moles of water, number of moles of water. So weight of water is 1000 gram. So number of moles of water equal to given mass of water 1000 gram. This is 1000 gram divided by molecular mass of water 18. Then after the calculation we have 55.5 mole. This is the number of moles of water. And number of moles of nitrogen gas dissolves in 1 liter of water, हम लोग क्या करना है? Find out करना है. How many number of moles of nitrogen gas dissolves in water? We have to find out. So this question is related to Henry's law. Now applying according to Henry's law, partial pressure of nitrogen equal to Kh into mole fraction of nitrogen. हम लोग क्या किया? नाइट्रोजन गैस के लिए हेनरीज लॉ अप्लाई किया. सो इनको हम लोग मॉडिफाई कर देने से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस is equal to individual number of moles of nitrogen gas divided by what? Total number of moles. So in place of
mole fraction of nitrogen gas, we can write individual moles of nitrogen gas in the solution divided by total number of moles. This is comes from the definition of mole fraction of the nitrogen. So gas in liquid is a dilute solution. In case of dilute solution, number of moles of solute very less than the number of moles of solvent. In a dilute solution, number of moles of a solute is very less than the number of moles of solvent. Then sum of the number of moles of nitrogen and number of moles of water, approximately we can write number of moles of water. So this relation becomes now, therefore this relation becomes partial pressure of nitrogen equal to Kh into number of moles of nitrogen divided by number of moles of water. Now we have to calculate the number of moles of nitrogen. So number of moles of nitrogen cross multiply करना है, number of moles of nitrogen इनको calculate करना है. So number of moles of nitrogen equal to partial pressure of nitrogen into number of moles of water divided by Henry's constant Kh. So putting the values, partial pressure of nitrogen given in the equation 0.987 bar, then number of moles of water 55.5 mole divided by Henry's constant Kh, value of Kh 76.48 into 10 to the power 3 bar. So after the calculation it becomes 7.16 into 10 to the power minus 4 mole. To convert into millimole, 7.16 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 3, then it becomes millimole. So after the calculation finally it becomes 0.716 millimole. So this is the answer for this question. Similarly, two more in-text questions. Questions number 2.6 and 2.7. These two questions are important for you. So ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है. These are in-text question. In-text question 2.6 and 2.7. These are two questions related to the Henry's law. ये दोनों क्वेश्चन को सोल्व करने से Henry's law का कंसेप्ट क्लियर होगा. So practice these two questions 2.6 and 2.7.